ओके। हर खाने से पहले मैं इसबगोल का छिलका जो है वो पीता हूँ, जो कि ओवरनाइट सोक किया हुआ होता है। मैंने इसको भिगोया हुआ होता है, क्योंकि इससे जो है वो आपका खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मज़ीद कम हो जाता है और आपका जो हाजमा है वो काफ़ी स्लो हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग आपको ना तो भूख लगती है, आपका जो बॉल मोमेंट है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो है इसमें फाइबर होता है, कैलोरीज ना होने के बराबर होती हैं। सो इट फिल्स योर स्टमक मोर देन 50%। ये देखें ना कैसे ये एक जेल सा बना हुआ है इस वक्त इसका, ये आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने 6 एग वाइट्स लिए हैं, उसके अलावा नीचे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं जो मैंने रात को ही तैयार कर ली थी, ताकि सुबह उठ के मुझे किसी किस्म का कोई तरद्दुद ना करना पड़े। ठीक है, ये एक हाई प्रोटीन मील है, इसमें चीज़ भी है। अब क्या करें, छड़ा लाइफ में तो फिर आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। व्लॉगिंग से ये है कि थोड़ा सा इंसान खुद को बिजी भी रख लेता है और आप लोगों को भी यहाँ का लाइफस्टाइल जो है वो नज़र आ जाता है। चलें जी, इट्स रेडी। तो ये मेरे पास एक पिज़्ज़ा का स्लाइस रखा है कोई 4-5 दिन पहले का। सो फाइनली मेरा जो पिज़्ज़ा है वो भी रेडी है, और चूँकि ये 3-4 दिन पुराना में एक स्लाइस है तो फ्रिज में रख के मैं इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने बाद में एक टूना फिश का कैन मिलाया था, 6 एग वाइट्स हैं, क्यूकम्बर है और इसके अलावा इसमें और कुछ वेजिटेबल्स हैं। ठीक है,
मुझसे ही उन्होंने 3-4 लोगों ने पूछा है कि आप लोग जब इतने हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं तो आप अपना जो किचन गार्बेज होता है उसको कहाँ पे डिस्पोज करते हैं, ठीक है। सो आई एम गोना शो यू, कम विद मी। ओके, सबसे पहले तो हम इसको, यहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े बैग्स होते हैं, बिन बैग्स, हम उनको इकट्ठा करेंगे और उसके बाद मैं आपको शूट रूम लेके चलूँगा। हर फ्लोर पे एक शूट रूम होता है, ठीक है, आपको मैं वहाँ लेके चलता हूँ। कम विद मी। मैं ही फेंकता हूँ और अनफॉर्चुनेटली जो टेनेंट्स हैं वो नहीं फेंकते। तो हर फ्लोर पे इस तरीके से एक डिस्पोजेबल होता है, तो इसको मैं ओपन करूँगा। इसके अंदर मैंने डाला और इसको सिर्फ मैंने, वो नीचे चला गया। चलें जी, टी टाइम। I'm all ready to go to gym. Let's go with me. इस रोज से देखा है तुमको, हम शमा जलाना भूल गए। That becomes the starting point for next round of negotiation. The other thing that concerns me right now is the whole issue of rules of origin comes into every day. And you can't think about the impact of tariffs if you don't understand rules of origin. Those are things that... It's good that you put that out because I've noticed in these negotiations, overall, there is a lot of division. There are provinces divided against each other, all of them have their own things that they want and desire in order to act a certain way. There are industries against each other in a matter of speaking as well. I mean, you hear from the lumber industry all the time that they do more business than the autos, various farming industries as well. So that division, I mean, that doesn't seem to be helping matters in this discussion either. And it seems to be intentionally done on the part of the U.S. So let me start off just by correcting the record. The number 2 export industry in the country is oil, right behind energy. Everything else trails behind. And the reason for that is the very deeply integrated supply chain that exists in this country to support our money. So when we talk about steel and aluminum, well, that's an automotive issue too. When we talk about parts, critical minerals, you name it, all of those things roll up in the supply chain for cars. So it is a critical issue, and I don't want to diminish the impact that these trade issues are having on other parts of the economy, but the reality of it is that in every trade deal where the automotive issues have come up, Canada's backed off a little bit. It's made more and more difficult for us to build cars and ship them to the United States. So we're now at that sort of existential moment. It's kind of the Australian moment for Canada, where we have to decide whether we're going to have an auto industry or not.
And if we're not going to have one, then somebody better be thinking of a strategy for how we replace that actual economic activity, where we deal with all these bans coming from not being able to export cars to the U.S. And so this is I will not make light of the other parts of the economy. And frankly, some of the things that we could do around the world also have regional political impacts. The reality is that the biggest leverage that we've got in dealing with the U.S. on overseas our market. You often hear Donald Trump say litany from Canada and all those automobiles. What he does need is consumer dollars. We're the only major export market for American cars, and particularly for American pickup trucks. Now, if Mark Carney and the federal government decide to close the border to U.S. pickup trucks, it's not just going to be the U.S. that's complaining about that. I expect we'll hear loudly from Western Canada and from rural Canada. Because of the ball-bearing fire, today most people in Summerlin can finally go home. But not everyone will go home to find a home that is still standing. There's this thing about 150 structures have been damaged or destroyed by the fire, and that's an initial estimate. They wouldn't answer questions about how. Sources is that the Americans will remain steadfast not in doing enough. The Americans are willing to reduce the 25% tariff it has in effect against Canadian-made vehicles to 15%, and then saying, well, we'll lower that even more if those vehicles contain more American products inside the vehicles. But so far that hasn't been good enough for the Canadians to accept that deal. So the talks remain, the communication lines remain open, but so far it doesn't seem like a deal. We're pretty sure to have some sort of resolution. And we also know from sources that the Americans keep adding demands, and there are a bunch of other issues that the Americans have with Canada. For example, the Americans want more access to Canada's dairy market. Canada is trying to keep the supply management intact to maintain stability in that industry. The Americans also looking for preferential access for Canada's critical minerals and energy supply for its defense purposes. So there's a lot on the table here, and it's unclear if both sides will be able to land an agreement.
जिम से फ्री हो गया हूँ और काफ़ी इंटेंस वर्कआउट था आज। ज़्यादातर तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन जितना किया है आई थिंक वो काफ़ी है आज के लिए। I'm all drained। जिम के बाद थोड़ा सा बाहर फ्रेश होने के लिए आया हूँ मैं। सारा दिन की थकान और जिम करके जब इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है तो ये पानी का जो एक शोर है, ये शोर नहीं बल्कि एक म्यूज़िक लगता है। चलें जी, जिम करके मैं वापस आ गया हूँ। सो अब मुझे बाहर जाना है काम से और इस वक्त यहाँ पे तकरीबन रात होने वाली है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदा हाफिज़।